Hi friends, I'm seeing a lot of people are joining in. So just to cover about, okay, we are been talking about what are being opportunities in this market. What are been opportunities in this market? Okay, we have been seeing COVID-19 is creating COVID-19 has created a lot of damages, but it has also brought in importance to lot of industries. Also, it has given us opportunity to be with ourselves and to grow. We have been learning and we have been knowing it from very olden times that when fisherman is not on a work, he works on its net too. So we are going to prepare our net. And now almost the lockdown is on end, so we should now refurbish ourselves. We should now rejuvenate ourselves, think over, analyze ourselves, and try to bring in the change in our life. And let us see how dynamic it is. Many of you might have lost the job. Many of you might have been on a job. Many of them want to grow. For all these people, today's session will be a very, very important and very, very essential. Okay. I myself, Deep Kapadia, okay, proprietor with an INS consultancy, being with Brainjin Academy with number of education institute, teaching law, and being director with colleges, guiding to schools and colleges, is presenting you this program, opportunities after COVID-19, post COVID-19, what can be done. And I have here two friends of mine. Okay, one is Riaz Ansari and another is a special guest. Okay, called Lata Subraidu. Riaz Ansari is from Araha Consultancy, running from 2014, giving lot of opportunities for jobs. So today he will be talking about that people are losing job or gaining job, or is there vacancies are being there. Riaz will be talking on this thing and he will be guiding us that okay, there are opportunities or not. There is Lata Subraidu madam. She is an international business coach. She has been training a lot of people to and giving a hand holding to a lot of people to grow into the business. And she will be there with us helping you out in how to turn this opportunity to become an entrepreneur. She will be teaching you to be an entrepreneur coach. Of course, in this small time, everything is not possible to be covered, but yet we will be covering whatever is the maximum. But before we start, I want to share with you what are the booming industry post COVID 19. There are going to be some industry which is going to make large profit, and some of them are already doing, even though there is a COVID 19 problem. First is a basic requirement. We know basic requirement is food, shelter, and clothing. But here we will be seeing that groceries are there, supermarkets are there, clothes and fashion shop will also run once the lockdown will open. People will be needing lot of clothes and shops, and 3 months they have been doing no shopping. They have been saving money. Also, not only saving money, their shapes and size might also have been changed. Okay, I'm very sure they are taking care of themselves, but still, okay, clothes and fashion shop will always be there. If you are, just to share with you, we are into franchisee consultation, and I have got more than two or three grocery setup requirement. I have got more than three cloth or fashion shops requirement. This is a very unique thing, and this is going to make a boom into the market because people after lockdown are going to these shops for sure. Another is pharmacy. You know that for COVID-19 and for a lot of other medicine will be looked at a very, very priority. Okay, a small homeopathic medicine called arsenic album was been recommended by government, and people are been flowing out and taking up that arsenic album and using it out. They are benefiting also from that. Okay, so some small medicines also will get a scope, and big medicines also will get a scope. It does not mean that pharmacy will make what you can say lot of employees, but they can in marketing, selling, and at the same time when sale will increase, packaging industry will also be good. See what I am talking about, this 10 topmost industries which will be coming up after COVID-19 will also be giving lot of support to other small industry. Like see, pharmacy will grow, then there will be requirement of packaging.
There will be requiring of research and analysis. So this all things are coming up. There will be a requirement of patent. There will be a requirement of some other legal works. Okay, online courses, education is number three. It is very important. It has been booming already in COVID-19. Lot of people are been earning. Even we are one of them, that we are also into education, and lot of online courses we have also launched. We have been working on some earlier courses which we converted into online. So a lot of online courses will be there. These courses will be live as well as passive. Now, what do I mean by live? Now, today, what session we are doing is a live session. We are live, all of us are live. We will be talking to you one on one, and passive is recorded, like Byju's is doing, or some other 10th standard, 12th standard educational systems are doing, that already develop some software and application student can learn from it. Home-based activities also will be admired, that schools, any toy center, any creative center creates an activity and give it to the parent, and they can take that activities with the students, especially जब वो घर पे है. Okay, I will be talking in English and Hindi. कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते जाइएगा. तो नंबर 3 पे जो एजुकेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज, होम बेस्ड, and there is one avenue which will be very prominently growing. I have included it in education. Number of people take it separately. ये है training, coaching and consultation. People will require lot of training and coaching. I'm not talking about school student or college student. I'm talking about even an elder people. जो लोग business करना चाहते हैं, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा. वहां कोचिंग और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी. कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि कैसे एफिशिएंटली काम किया जाए, और वैसे ही कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी. हर जगह पर ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ेगी. Okay. Next, number 4 is facility management. Everyone will be looking to facility management because ये अभी बहुत शॉर्ट कम होने वाला है. हाउसकीपिंग सिक्योरिटी is one of the thing. Repairing, urban collapse, बहुत सारे 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोग घर पे आ नहीं सकते. बहुत सारे घर पे रह रहकर हमें पता चला है कि घर के अंदर क्या क्या रिपेयरिंग की जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम है. And we have sorted out that once it will open, so people will be calling up for this repairing and all. Pest control will be required. This all will be a growing industry. Lot of things are there in facility management. I am so naming few. Number 5 is hygiene industry. This is a very bomb industry. Sterilization, fogging, LLT treatment. You know, we all know that COVID-19 is passing not only by one-to-one connection. एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने से ही नहीं होता है, बट सरफेस से भी पास होता है. किसी कोविड-19 वालों ने सरफेस को टच किया, उसको हमने टच किया, तो वो भी हमें लग जाता है. तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज नए नए केमिकल के साथ मार्केट में उतरी हुई है, जो फॉगिंग और स्टेरिलाइजेशन करती है, जिससे एक एक महीना 3-3 महीने तक कोरोना का पेशेंट आपके घर पे भी है तो भी सरफेस से आपको कोरोना नहीं होगा. तो ये इंडस्ट्री में अगर आप चाहो तो आंख बंद करके पैसा लगा दो. ओके, कोविड-19 के प्रोडक्ट, मास्क, पीपीई किट तो इतना चल रहा है. कल ही हमारे प्रिय मित्र की एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरर है, उनका इंडिया टुडे ने कवर किया. उन्होंने कोविड-19 आने के बाद सोचकर बाद में पीपीई किट की फैक्ट्री डाली है, फिर भी आज उन्होंने करोड़ों में बिजनेस कर चुके हैं. Okay, they are our client. We are having lot of options. Okay, I have in hygiene industry, I have more than 2 to 3 people who are doing their franchises, who are doing their business with us. Okay, extra caution products are there. जैसे कि बहुत सारे कियोस्क बनाएंगे कॉर्पोरेट्स के लिए वगैरह, थर्मल कैमरा, इमेजर. अगर आप कभी भी कुछ भी पैसा लगाना चाहो, बिंदास इस इंडस्ट्री में लगा दो. Okay, if you have any spare money, small amount also may make a big money from this industry. This is a very booming industry. At least for 2 to 3 years, this is going to give us a big profit. नंबर 6 इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. जो बहुत सारे लोग समझते हैं आईटी नंबर 1 पे होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वही कमा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, वेबसाइट्स का काम चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, फिर भी ये नंबर 6 पे रहेगा. बिकॉज इसके ऊपर जो लोग मैंने बताए 5 लोग, दे आर डूइंग मच बिगर बिजनेस बाय सिटिंग साइलेंट. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट जल्दी से कर सको, आपको आईटी का नॉलेज हो, या आप आईटी के लोगों को हायर कर सको, तो क्विकली यू assimilate everything and start developing website, software, digital marketing team,
and start running it. Okay, the cheaper and better the branding, you will be accepted very quickly. इवन डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट मेकिंग के कोर्सेज भी बूम हो गए हैं. बहुत सारे लोग ऐसे सेमिनार्स और कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं. इवन हमने 2-3 डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज अटेंड किए हैं. ठीक है, बिकॉज हमें भी हमारे कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ लाना है. So you can understand what this market is going to give. नेक्स्ट इज होम एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन. नंबर 7 पे ये है. हम सब जानते हैं कि हम घर पे बैठकर क्या कर रहे थे. यूट्यूब, टीवी चैनल्स, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स यही देख रहे थे. ये एक बूम इंडस्ट्री है ही है. ऑफकोर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है, बट यस दिस इज ऑल्सो वन इंडस्ट्री. वीडियो गेम्स और क्रिएटिव टॉयज, मैंने देखा है बड़े बड़े लोग घर पे बैठकर इधर मोबाइल पे या तो खोल के लूडो, कैरम ये सब खेल रहे थे, और बहुत सारी पुरानी गेम्स ओपन करके बैठे हुए लोग. ओके, न्यूज मीडिया which will be online will also be going good. Times of India, Lokmat and many more companies are doing good. Okay, many more news medias are doing good. Very important is health industry. सबके हेल्थ पे घर पे बैठकर इफेक्ट हुआ है, तो इसीलिए जैसे ही ओपन होगा सब लोग हेल्थ की ओर जाएंगे. और आज भी इफेक्ट देखते ही इमीडिएटली लोगों ने हेल्थ कॉन्शियस होना चालू कर दिया है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा बूमिंग बिजनेस होगा फिटनेस एप्स, ऑनलाइन गाइडेंस. आप डायटिशियंस हो या आप किसी डायटिशियंस को लेकर ऐसा कुछ बिजनेस चालू कर सकते हो. आप कोई जुम्बा जानता है, योगा जानता है, तो आप लोग ऑनलाइन बहुत कुछ चीजें चालू कर सकते हैं. वैसे ही लॉकडाउन ओपन के बाद जिम, जुम्बा, योगा सेंटर, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का फोकस रहेगा. इवन हेल्थ प्रोडक्ट है जैसे कि मुसली है, या तो कोई और हेल्थ प्रोडक्ट है जिसे खाने से मसल्स बनता है, ये बनता है, उसके लिए भी लोग आगे भागेंगे. एक्सरसाइज के प्रोडक्ट है, मे बी डम्बल्स है या तो फिर बैंड है. ओके, ये सब लेने के लिए भी लोगों का उत्साह रहेगा. सो हेल्थ इंडस्ट्री इज ऑल्सो नंबर 8. नंबर 9 इज डिलीवरी सर्विसेज. इन डिलीवरी सर्विसेज मेजरली लोगों को लगता है इट्स अ कुरियर, पर कुरियर में भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं कि जैसे एक नॉर्मल कुरियर होता है और अमेजोन का जो कुरियर होता है या फ्लिपकार्ट का जो कुरियर होता है, दिस आर ऑल स्पेशलाइज्ड कुरियर. ये स्पेशली उन लोग के लिए ही काम करते हैं, तो ऐसा भी एक रहता है. ठीक है, टिफिन सर्विसेज भी चलेगी. मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को घर पे बैठकर खुद शेफ तो बन ही गए हैं, पर अभी जब ऑफिस जाना चालू करेंगे तो लोगों को घर का खाना ज्यादा पसंद होगा, तो टिफिन सर्विसेज के लिए भी लोग देखेंगे. ओके, तो दैट इज ऑल्सो डिलीवरी सर्विस. एंड वन विच इज अ वेरी आइकॉनिक बिजनेस जिसमें मैं बात करूंगा, उसको डिलीवरी सर्विसेज में मैंने रखा है, बट इट इज इटसेल्फ अ वेरी डिफरेंट बिजनेस, दैट इज ई कॉमर्स. अभी सब लोग डीमार्ट में जाने से, बिग बाजार में जाने से, या तो कोई बुक शॉप्स में जाने से डरेंगे और ई कॉमर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करके मंगाएंगे. और हमने देखा है वहां पे बहुत सारी चीजें चीपर भी मिलती है, बहुत सारी ऑफर्स भी मिलती है. तो ई कॉमर्स का बिजनेस इज अगेन गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग. ठीक है, एंड हो सकता है कि विद इन अ ईयर एंड ई कॉमर्स विल कम ऑन द टॉप ऑल्सो. नंबर 10, खाने के बिना किसी को चलता नहीं है, बट जहां तक हमारा मार्केट का स्टडी है, हमारा बिहेवियर स्टडी है, लोग रेस्टोरेंट में जाकर, कैफे में जाकर बैठना कम पसंद करेंगे. पर यस, खाने की जो टेस्ट है उसके लिए वो लोग ऑर्डर जरूर करेंगे. और ये ऑर्डर करने के लिए लोग जो प्रिफर करेंगे, इट्स मोर ऑफ अ क्लाउड किचन, जो घर के जैसे चलता है, पर खाना का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. तो क्लाउड किचन्स लोग ये करेंगे. यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास नहीं नहीं तो भी 7 ऑर्डर्स आर देयर टू क्रिएट अ क्लाउड किचन बिफोर August end. Okay, we are working on it to create a cloud kitchen in Navi Mumbai, in South Mumbai and various places. Also उसके साथ ready to eat. ओके, पानी में डालो, गर्म पानी में डालो, हो गया. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट नए मार्केट में आ रहे हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं. लोग ये भी प्रिफर करेंगे. ओके, और इसका भी बिजनेस, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, आप इसे चला सकते हो. ओके, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो. ओके, वी आर हैविंग 3 clients who are dealing with ready to eat food. Packaged food is also one of the industry which will be growing. Okay, people will be preferring packaged food. Okay, these are the top 10 industry which are booming and it will be going on good.
इसके साथ I have pulled up that with this pull there will be other industries also which will be growing, and that is manufacturing, because manufacturing की requirement होगी ही, फूड की इंडस्ट्री आएगी तो उनको लगने वाले इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन और बाकी की इंडस्ट्री में लगने वाले इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो वेयर हाउस अगेन विल बी बाउंस, आई विल कॉल इट बाउंस बैक, क्योंकि ये वापस ओपन हो जाएंगे तो उन लोग अपना बिजनेस रिकवर कर लेंगे। ऑटोमोबाइल हम लोग देख रहे, ट्रेन वेन की जरूरत, ट्रेन वेन बंद है तो आजकल सब लोग को कार और बाइक से ही काम करना पड़ता है, और बाइक इज ऑल्सो रिस्की तो पीपल आर यूजिंग मोर ऑफ कार। टाटा जैसी कंपनी ने तो ऑफर रख दिया है कि 5,000 का चेक लेकर आओ और कार लेकर जाओ। Okay, this offer has also been started. Okay, so you can see automobile company will again recover, though automobile should become little bit cheaper than what it was earlier. Okay. Professions like CA will be doing regular. Lawyers will again get a boom, especially those who are with patent, those who are with family. This all will be again getting a good mileage and they can go ahead. Online events जो करवाते हैं उनके लिए भी अच्छा पुल होगा। ये सभी इंडस्ट्री जो 10 इंडस्ट्री मैंने लिया है और उसमें जो कोई नया बिजनेस चालू करने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, उनको ब्रांडिंग अच्छा करना है। इनफैक्ट मैं अपनी बात बता दूं, मेरे ऑफिस के लोगों से भी मेरे को कॉल आ रहे हैं कि सर हमें ब्रांडिंग के लिए अच्छी एडवर्टाइज चाहिए, और मैं भी यही देख रहा हूँ कि लॉकडाउन के अंदर मेरे को अच्छी एडवर्टाइज कौन बना के दे सकता है। तो पुल डाउन के अंदर ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का भी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और इसमें बड़े प्लेयर से ज्यादा स्मॉल प्लेयर जल्दी आगे निकल जाएंगे। स्मॉल प्लेयर को बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी एडवर्टाइजेस हम जल्दी बनवाएंगे, which may be costing us in thousands and hundreds and thousands of rupees. Also BPO will cover back its position and they will also be good, और वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सारी कंपनीज हमारे साथ है, हमने सारे प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट फेस कर दिया है, हम अभी वो फेज में है कि ये चैलेंजेस के साथ हम वापस आगे बढ़े। बेंजामिन फ्रैंकली had very nicely said that out of adversity comes an opportunity. COVID-19 ने जो blow दिया है, it's not a blow. Take it as an opportunity. Take it as an opportunity. Think yourself, analyze yourself. आप जहां चाहे वहां हमारी हेल्प ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसा करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत सारी चीजें तो बोलना चाहता हूँ, बट बिफोर आई कम ऑन एनी अदर टॉपिक, I will ask my friend Riaz to take over the baton. Okay, again, I will introduce. Hi. Hello. Again, I will introduce Riaz. He is from 2014 as an ARA consultancy. He has been giving a lot of consultancy. Okay, his company is also associated with us. We are building up its franchisee, and already 2 to 3 franchises are booked, and he is doing a very booming business. Young and dynamic person to go ahead with. So I will give an over baton to Riaz. Riaz, please take over. Hello. Yeah, hi, this is Riaz here. Audible. Hello. Yeah, hi, this is Riaz here. As you have been aware about the all the industry, like you have been seeing the pharmacy industry and the number of banking industries are running. So there are number of vacancies which are being created right now. They are having a number of things because of those requirements. So I just want to inform you, okay, if you are searching out for a job locality and if you are planning on any business like industries like the banking industry, pharmacy industry, or facility management industry. So if you're searching for events or event management type of, that would quite help you. Hello. Your voice. Is it audio?
Voice is not audible. Is it audible? Hello? Yes, your voice is not audible. Yes, can you hear me? Hello, yes. Is it audible? Hello? Yeah, yeah, go ahead. Yeah, audible right now, right? Now we are yeah, yeah, now we can hear. Okay, so I'll restart again. As of my introduction, as you all know about myself, my name is Riaz Ansari. And you aware about myself, I'm running an industry from 2014, then last 6 months. And I have been faced a number of industries. I have been like mint industry, construction industry, supermarkets, pharmacy, telecommunication, and banking sector. Number of sectors, number of industries are there, and they are having the requirement. Yes, yes, I think so. You can come little bit in front. We can hear you properly. Yeah, go ahead. Okay, Yeah, yeah, please. okay. Is it clear right now? Yeah, very much audible. Okay, good. So where am I? I'm having requirements. Like you have been aware about the industry, and I'm already working. Yeah, I'm working out with the BPO industry, like a telecommunication and a construction industry, and number of another industry. They're working out with full. They are having a number of requirements. Okay, so if you are searching or planning for a change because of COVID-19, कई सारे लोगों ने जिसका 50 और तो जैसे लाइक मेरे ही कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें बंद हो गया, अभी तक के कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि महीने के अंदर बिजनेस का थोड़ा सा इशू है, बट एज ऑफ एन कंपनी आई कैन से कि हेलो, Hello. समवन I think earphone is the problem. शर्मा रिपोर्ट। Riaz, remove यस, the earphone. Remove the earphone and speak directly from the. And go near and speak little bit. कौन? हेलो सर, कैन यू टेक Uh, till Riaz, till Riaz connect out with its audio and its make out its all problems. Okay. Till that, can I shift it to Lata madam? Lata madam, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Well, let me introduce Lata Madam first very deeply. She was a district governor. She's a past district governor of Rotary Club. She's very dynamic lady. We have seen her leadership very nicely and very closely. And being a dynamic leader, she has also selected a path of dynamic leadership training. So basically, now she is training people to become an entrepreneur. And with this motto only, we are bringing her here on this platform. We have invited her on this platform to guide our entire group that can we convert ourselves into a businessman. So Lata madam, please guide us that how we can become an entrepreneur. We can use our this opportunity with minimum budget and maximum budget
we can change ourselves into a businessman, because this business is a very, very essential thing. It is an attraction of, a lot of people. And people are also afraid of this thing. People are feeling that if we are going into the business, we will be affected by it. Okay, and the job is only our portfolio. So can you please guide over this? So I hand over the baton to Lata madam. Good afternoon, friends. Can you hear me? Yes, we can. Hello. Hello, yeah, we can hear you. Okay, so leave it. Friends, as we all know, we are in the COVID-19 era. Though the partial lockdown has been removed, it would not be the same. The world would not be the same as it is as it be. The virus will not disappear soon. The government has shown us the way how to keep ourselves safe. So now we have to look after ourselves to keep ourselves. Washing hands often, wearing masks, keeping social distance is the new normal. This is going to be the new normal for all of us now. We can't do away with it. Let us not be careless. Let us take these precautions to be safe. So where does it leave us all? Are our jobs safe? Are we going to get the 5 and 6 figure salary that we were getting? Or we will be able to keep our jobs at all? We are hearing of people getting 50% salary already, or somebody being asked to leave the jobs also. And it is going to be very difficult for us to maintain ourselves, our lifestyle, and our families. So if your salary is cut down 50%, or you're sacked, or you lose your job, what will be going to do? How will the family survive? How will the children study? How will we take care of the elderly, their health, their medicines, etc.? I'm sure you all have thought about it. And even Deep has told you about all the businesses that he's mentioning that will be booming. Some may have got the answer, but may not. Some may be still thinking that is that all? Is it what I can do? And some smart ones would have joined this webinar today to understand the situation and take action. Prime Minister Modi ji said, हमें आत्मनिर्भर बनना है. उसका मतलब क्या है? देश तो आत्मनिर्भर बनेगा, चाइना को निकाल फेंकेगा, लेकिन हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमें भी तो आप लोग कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? So, can we start a business of our own? What do we need to start a business of our own? First of all, a passion, hard work, and some skills. These are three main things that you require: is passion, hard work, and some skills. पैशन और हार्ड वर्क तो आप स्किल्स हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे. वंस यू जॉइन द क्लास, आप में भरपूर आत्मनिर्भरता है, हमें पता है, आप में भरपूर पैशन है, लेकिन स्किल्स की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट टाइम्स यू हैव टू फॉलो डिफरेंट रूल्स. हमने पहले कहा था बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है. अब जब हम बात करेंगे तो बीसी का मतलब होगा बिफोर कोरोना, और एडी का मतलब होगा आफ्टर डिस्टेंसिंग. इट विल नॉट बी एडी जैसे हम बीसी और एडीसी बोलते थे, अब एडी